गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डॉनबैस रिपब्लिक्स। तो आपको बताया कि रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने डॉनबैस रिपब्लिक्स जो हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर लिया है सेपरेट कंट्री, क्योंकि ये यूक्रेन की जो इशू चल रहा है इसमें ये दोनों ऐसे रीजन्स थे जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और यहाँ पर रशियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर 2014 में क्या हुआ था जब क्राइमिया को रशिया ने अनेक्स किया था। तो इन दो एरियाज़ में भी जो है जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं एज रिबेल्स जो है वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए थे। अब यूक्रेन का ये कहना है कि ये जो रिबेल्स हैं ये रशियन गवर्नमेंट बैक्ड हैं और ये रशियन मिलिट्री के ही लोग हैं और जो यहाँ पर भेस बदल कर यहाँ पर रिबेल बन गए हैं। तो इन दोनों रीजन्स को जो है डॉनबास रिपब्लिक्स कहते हैं इन दोनों को। और इसको अब जो है टेंशन्स एस्केलेट होते हुए जो है यूक्रेन के साथ टेंशन्स एस्केलेट होते हुए रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इनको सेपरेट कंट्री के रूप में रिकग्नाइज कर लिया है। तो ये डॉनबास रीजन जो है आपके साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है। ये देखो आप मैप में देखते हैं, ये आपका रशिया है, ये आपके डोनेस्क और लुहांस्क ये हैं डॉनबैस रिपब्लिक्स। ये आपका सी ऑफ अजोव है। तो ये जो डॉनबैस है यहाँ पर इनके ये सी ऑफ अजोव के साथ टच होते हैं। ये आपका क्राइमिया रीजन है सेवेस्टोपॉल वाला, जो जिसको रशिया ने 2014 में अनेक्स किया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि ये ब्लैक सी और जो है सी ऑफ अजोव को टच करता है क्राइमिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है ये आपके रशिया के लिए, इसलिए सबसे पहले रशिया ने इसी को अनेक्स किया था। ठीक है, अब हुआ क्या, अभी रिसेंटली जो रिबेल लीडर्स हैं डोनेस्क और लुहांस्क जो कि डॉनबैस रिपब्लिक्स के, इन्होंने जो है प्रेसिडेंट पुतिन को जो है वो रिक्वेस्ट किया कि हमको आप सेपरेट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज़ करो। तो ये जो है रशियन स्टेट डूमा जो वहाँ की पार्लियामेंट है पहले उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट ने डिक्री साइन किया कि यस ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये सेपरेट कंट्री हैं, ये यूक्रेन का पार्ट नहीं है। अभी तक और किसी कंट्री ने इनको सेपरेट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में रशिया के जो अलाइज हैं वो धीरे धीरे जो है इनको सेपरेट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैप से देखने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाल दिया गया मैप भी। ये लुहांस्क और ये डोनेस्क रिपब्लिक्स हैं। ठीक है, ये सी ऑफ अजोव है, ये आपका ब्लैक सी है नीचे सारा एरिया, ये क्राइमिया है, ये रशिया है और ये यूक्रेन है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मिन्स्क एग्रीमेंट्स। तो यूएस अथॉरिटीज़ ने रशिया को वार्न किया है कि आप यूक्रेन में इन्वेजन मत करो और मिन्स्क एग्रीमेंट्स के ऊपर वापस जाओ टेबल पर, जो कि 2014 और 2015 में साइन हुए थे। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, तो हम देखते हैं दोबारा से मिन्स्क 1 क्या था और मिन्स्क 2 क्या था। ठीक है, तो मिन्स्क 1 जो है वो 12 पॉइंट सीज फायर डील थी, जो बेलारस जो कि मिन्स्क वहाँ की कैपिटल है, तो वहाँ पर साइन हुई थी। और ये इस सीज फायर डील में प्रिजनर्स एक्सचेंज किए गए, ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर की गई और हैवी वेपन्स को विड्रॉ किया गया यूक्रेन और जो है आपके रशिया द्वारा। ठीक है, तो इसमें लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो वायलेट दोनों साइड ने कर दिया, इसलिए ये टॉक्स जो है वो ब्रोक डाउन हो गई। इसके लिए मिन्स्क 2 की ज़रूरत पड़ी जो कि 2015 में आया। तो फरवरी 2015 मतलब लगभग 5-6 महीने बाद ही मिन्स्क 2 की ज़रूरत पड़ी, जब रशिया, यूक्रेन, ओएससी के अंदर आपके जो है फ्रांस, जर्मनी ऐसी कंट्रीज़ आती हैं। ऑफ कोर्स यूएस वगैरह भी हैं, बट फ्रांस और जर्मनी मेनली ये कंट्री आती हैं इसके अंदर। तो ये जो है इन्होंने एक तरह से मीडिएशन किया रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन ये चारों ने मिलकर जो है मिन्स्क 2 में पार्टिसिपेट किया और कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टेप्स लेने की बात की, जो ऑफ कोर्स अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन रशिया ने इंसिस्ट किया कि हम तो इस जो है कन्फ्लिक्ट में पार्टी ही नहीं है, ये तो यूक्रेन की इंटरनल प्रॉब्लम है। वहाँ के जो डॉनबैस रिपब्लिक्स में रिबेल्स हैं वो यूक्रेनियन के गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन यूक्रेन ने कहा नहीं, ये जो है बाहर से फोर्सेस आ रही हैं और ये रशियन आर्मी के लोग हैं या रशियन रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, तो जिसको रशिया ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इस मिन्स्क 2 एग्रीमेंट में ये बात जो है तय हुई कि जो यूक्रेन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएगा और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स करेगा इन दोनों एरियाज़ में, डोनेस्क और लुहांस्क में। और इस हिसाब से इलेक्शंस होंगे जैसा कि वहाँ के रिबेल्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स इसको यूक्रेन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी वजह से जो अब आजकल जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में वो इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि रशिया कह रहा है कि मिन्स्क 2 एग्रीमेंट में जो यूक्रेन ने एग्री किया था उसको अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। 5-7 साल हो गए हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर रहा है यूक्रेन। तभी जो है रशिया जो है वो अब जो है सामने से दोबारा से कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, सो अब एक और
टॉपिक है इसमें नॉर्मैंडी फॉर्मेट। तो नॉर्मैंडी आपका फ्रांस में पड़ता है। तो मिन्स 2 के फेल होने के बाद जो है फ्रांस में दोबारा मीटिंग की गई, और फ्रांस में ही जर्मनी, यूक्रेन, रशिया और फ्रांस के लीडर्स जो है वो मिले, और उन्होंने इनफॉर्मल बात की कि कैसे इस जो है 2014 में इनफॉर्मली बात करी कि कैसे ही जो है यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो यही जो है दोबारा अभी रिसेंटली भी आपको याद होगा डिप्लोमेट्स ने नॉर्मैंडी में ही दोबारा मीटिंग करी थी अभी इनफॉर्मल ही, और ये सीज़ फायर साइन किया था। लेकिन ऑफ कोर्स अब आप देख रहे हो कि सीज़ फायर तो कोई साइन जो है वो कुछ नहीं टिका। अब जो है टेंशन्स एस्केलेट हो गई हैं। तो आने वाले टाइम में देखने में पता लगेगा कि अब इससे आगे क्या सिचुएशन बनती है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि एक पटिशन आई है हमारे पास जिसमें ये कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया जाए वेल डिफाइंड लॉज के थ्रू। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट एक्ट 42 था उससे लाई गई थी, और पार्ट 4A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। और आर्टिकल 51A सिर्फ अकेला ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं। तो ये हमारे को ये याद दिलाती हैं कि अगर आपके सिटीजन्स होते हुए फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपको जो है आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं स्टेट के लिए, इंडियन स्टेट के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। अब ये ड्यूटीज़ इसलिए लाई गई हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके। अब ये ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो फंडामेंटल राइट्स में ही दिखती हैं। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर रखना, किसी और को जो है आपके एक्शंस तंग ना करें, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सारी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑलरेडी हमारे एज एन एक्सेप्शन फंडामेंटल राइट्स में आई हुई हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही जो है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक तरह से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये जो है इम्प्लिसिट है हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही। अब अनफोर्सिबिलिटी ऑफ ड्यूटीज़ देखते हैं। तो अब बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हुई, बहुत से ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में गए जिसमें कहा गया कि इनको जो है एनफोर्सेबल बनाओ, क्योंकि आपको पता है ये एनफोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई सिटीज़न जाके ये नहीं कह सकता कि ये ड्यूटी जो है कोई सिटीज़न नहीं, कोई दूसरा सिटीज़न जो है वो नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर जो है कोई केस किया जाए, ठीक है। तो ये क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, अब समझ लो कोई भी, जैसे अब आपको एक हिजाब रोहित हम देख लेते हैं। जब हिजाब का जो ये सिचुएशन चल रही है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जब आर्गूमेंट दिया जा रहा है तो जो है कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कह रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कह रही है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने के लिए जो है हमको कोई एक्शन लेना पड़ रहा है ना। तो अब जो है ये इम्प्लिसिट ही हो गया, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही एक जो रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर की है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो एक तरह से जब कोई हमारा कोर्ट जो है जब वो किसी फंडामेंटल राइट की इन्फोर्सिबिलिटी को देखता है तो उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी देखता है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ही की तरह ही है। तो वो उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी देखता है कोर्ट कि यस हाँ, पब्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन करने के लिए ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे को याद रखना चाहिए कि अगर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, हमारी एंटाइटलमेंट्स के साथ हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो इसीलिए जो है हमको हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए सिटीजन्स के राइट्स में और सिटीजन्स के ड्यूटी में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगले 5 साल के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को जो है वो अप्रूव कर दिया है कंटिन्यू करने के लिए। अब इसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से जो है स्टूडेंट्स वो एलिजिबल होंगे, जैसे जिनकी पहले 1.5 लाख पर एनम जो है इनकम होती थी उसको बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और इस स्कीम में कहा गया है कि अगले 5 साल में 14.5 या 15 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इस स्कीम में होता क्या है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो उनको जो है क्लास 8th के बाद जो है वो वो ड्रॉप आउट ना करें स्कूल से, इसलिए उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो हर बार जो है वो 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप दी जाती है जिनको 12,000 रुपये पर एनम मिलते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ हो गए, पर स्टूडेंट को मिलते हैं। और ये ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है क्लास 9th में जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, ठीक है। तो वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल या लोकल बॉडी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो सकते हैं, और उनको एक एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है जो कि एग्जामिनेशन स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स ही कंडक्ट करती हैं। और जो ये स्कीम है, जो स्कॉलरशिप है, वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ही डीबीटी मोड के द्वारा डाल दी जाती है।
अब ये सारा पैसा जो भी ये स्कॉलरशिप का पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो 25th मीटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, उसको मुंबई में भी जो है वो कंडक्ट किया गया है, और चेयरपर्सनशिप जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होती है इसकी, ठीक है। तो ये काउंसिल जो है एक नॉन स्टेचुटरी एपेक्स काउंसिल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बनाई गई है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा, जो कि 2010 में निकाला गया था। अब इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और बाकी जो है आपके फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जो हैं उनके हेड्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आरबीआई के हेड, आरबीआई के चेयरमैन, सेबी के हेड, पीएफआरडी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए या फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। तो मई 2018 में गवर्नमेंट ने एफएसडीसी को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया, और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है फाइनेंस के, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं, उनको भी ऐड किया गया। फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको भी ऐड किया गया। फिर चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई, उनको भी ऐड किया गया, और रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। अब ये हमारे कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए ये काउंसिल को बनाया गया है। इसमें सजेशंस लिए जाते हैं। तो रघुराम राजन जी की कमेटी थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, उनकी रिकमेंडेशन थी 2008 की, उसके ही बेसिस पर इसको बनाया गया है 2010 में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है शकुंतला चौधरी। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने ग्रीफ प्रकट किया है, क्योंकि जो है एक नोटेड गांधीयन शकुंतला चौधरी जी जो है उनका डिमाइज हो गया है। तो जो है ये एक सोशल वर्कर थे, और ये गांधीयन वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करते थे अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है। तो 1947 में इन्होंने असम ब्रांच जो है कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की, उसको ज्वाइन किया, और ये विनोबा भावे जी से के साथ बहुत लंबे टाइम तक एसोसिएट रही। इवन उन्होंने असोमिया विश्व नगरी, ठीक है, तो एक देवनागरी स्क्रिप्ट का जो है एक मंथली मैगजीन भी निकाली, ताकि देवनागरी स्क्रिप्ट को पॉपुलराइज किया जा सके। विनोबा भावे जी के बैन काओ स्लॉटर सत्याग्रह जो है कि 1978 वाले, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसीलिए 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Donbass republics. So you know that the conflict at Ukrainian peninsula has reached a very high point, and before it reaches its crescendo, this situation is getting out of hand. Now the Russian president has recently recognized the independence of this eastern Ukrainian separatist republics, that is the Donbass republic. So these are the two republics, Donetsk and Luhansk. So these are the regions of southeastern Ukraine which were having troubles since 2014 when Russia annexed Crimea. So during that period, when the Ukrainian conflict was at its peak, the rebels in these two areas basically went against the Ukrainian government. Of course, it is a part of Ukrainian territory, but the people or the rebels in these areas took up arms against the government. They wanted a separate country for themselves, and they wanted to be associated with the Russian Federation, because a majority of the people living in these republics are basically Russian in origin. Okay, so about the Crimean Peninsula also, you know that it is located on the northern coast of Black Sea. It is surrounded by both Black Sea and the Sea of Azov. It is separated by the Strait of Kerch. So recently, what happened is that the rebel leaders of both Donetsk and Lugansk republics, they appealed to President Putin that that he should recognize them as independent countries. So the Russian parliament, that is the State Duma, recognized these territories as Russia as independent countries. To which the Russian president recently responded by recognizing them as sovereign territories through a decree. And this conflict is basically getting out of hand now, and this area, now let us see it through the map. So this is Russian Federation, this is entirely Ukraine, but these are the Donbass republics, that is the Luhansk and Donetsk. Okay, so these two areas are controlled by Russian backed separatists, and Crimea has already been annexed by Russia, and now these two areas have been declared as independent countries. They're not part of Ukraine as per Russia now. So Russia is of course planning to send military here to prevent these two areas from Ukrainian military. So maybe let's see what happens in the next few days, if the conflict reaches another high point, or if it goes out of hand. Okay. So now let us the next topic, which is
Minsk agreement. So you know that US authorities have warned Russia that it should not invade Ukraine, and the US has also urged both Ukraine and Russia to return to a set of agreements known as the Minsk agreements. So these agreements were signed in 2014 and 15 respectively. So the first agreement, that is the Minsk one. Minsk is basically the capital of Belarus. So these agreements were signed in Belarus. So the first one was signed in September 2014. So it was basically a ceasefire deal between Russian-backed separatists and Ukraine. So it included prisoner exchanges, delivery of humanitarian aid, and withdrawal of heavy weaponry from these areas. But of course, the talks broke down because both sides violated the pact. So that because of the violation of this pact, there was a need of another pact. So in February 2015, another agreement was signed in Minsk between Russia, Ukraine, the OSCE group. Here it means this group was of course represented by France and Germany, and the two pro-Russian separatist regions were also represented in this Minsk II agreement. So these leaders met there, and a series of military and political steps were suggested. Of course, these steps remain, of course, unimplemented as of now. But a major blockage was by Russia, because Russia said that it is not even a party to this conflict. So the rebels have took up arm against the Ukrainian state, and Russia has nothing to do with that. Of course, it was not the case in reality, because Ukraine was alleging that these rebels are actually Russian backed. Some Ukraine even alleged that the Wagner group, which is a private military contractor of Russia, is involved in these two areas, and former Russian army people are involved in these areas, and they are training these rebels to fight against the Ukrainian state. So Ukraine said that all foreign forces should leave these areas, to which Russia disagreed, and it said that we are not involved in these areas. But of course, these agreements had some political dimension also. So Ukraine had to abide by the constitutional reform, and it must have decentralized powers to these Donbass republics, and it should have conducted elections in these areas as per the terms agreed with the representatives who were participating in Minsk II. But because Ukraine failed to uphold the constitutional reforms, or it failed to bring constitutional reforms itself, it has tested the patience of Russians. So Russia is saying that the Minsk II agreement has been violated by Ukraine, because it has not brought this constitutional reforms, and it has not transferred powers to Donetsk and Luhansk as per the agreement. That's why this conflict has flared up again in 2022, and it has reached such a high point that a war like situation has erupted in this Ukrainian peninsula. Okay, so now let us see the next topic, which is fundamental duties. So Supreme Court has asked both the union and state governments to respond to a petition which is asking for a comprehensive, well-defined laws so that fundamental duties of citizens can be enforced. So Supreme Court has asked for the response from the governments, but let's see about the fundamental duties. You know that they are not enforceable by law as of now. These duties were brought by the constitutional 42nd Amendment Act of 1976. So it has brought the part 4A in the constitution, and only article 51A represents the all the fundamental duties. Okay, so fundamental duties purpose was to remind people, or the citizens of India, that they have an obligation towards the state, because they are also enjoying the rights. So they also have an obligation again towards the state. So what are let us see the character of these duties. So you know that these duties are applicable to individual citizens. It aims to strike a balance between individual freedom and social interests. So in the Union of India versus Naveen Jindal case, the Supreme Court reminded the citizens that fundamental duties are implicit in the concept of fundamental rights. You know that almost every fundamental right has certain restrictions. So these restrictions are coming from the fundamental duties itself. You know that public order and law and order, all these are basically also reflected in the fundamental duties also. So these restrictions on the fundamental rights are also visible in our fundamental duties. So that's why Supreme Court said that it is implicit in the concept of fundamental rights. So
enforce about the enforceability of duties. So, several times many petitions have been made to the Supreme Court that these duties should be made enforceable in the court of law, but every time Supreme Court has said that the whenever we examine any action, let's learn through the recent hijab controversy in Karnataka, when the petitioners were arguing that they have a freedom of religion to wear hijab, the Karnataka government utilized the restriction of public order, which is also, of course, a part of our fundamental duties. So, the Supreme Court or any other court, whenever it is examining the infringement of any fundamental right of any citizen, it also sees the concept of fundamental duties in that. Okay, before deciding upon any case, it also takes into account the fundamental duties. If the person or the concerned citizen has followed the fundamental duties, only then the person will be accorded the benefit of fundamental rights. Okay, so it is basically reminding us time and again that with entitlement comes duties and responsibilities too. Okay, so now let us the next topic, which is national means come merit scholarship. So government has approved the continuation of central sector scheme national means come merit scholarship for the next 5 years. So certain modifications have been made in the eligibility criteria, like the income ceiling has been increased from 1.5 lakh per annum to 3.5 lakh per annum, and the aim is to disperse scholarships to about 14.76 lakh students in the next few years. Okay, so this scheme is basically awarding scholarship to meritorious students of economically weaker sections so that they should not drop out of school after the class 8th. Okay, so you know that after since up till class 8th you have right to free education, but that right disappears after the class 8th. So that's why certain students drop out of school. That's why the government wants to ensure that the economically weaker students do not drop out from schools, so they are given scholarships. So about 1 lakh fresh scholarships of 12,000 per annum, that is about 1,000 per month per student, is given to class 9 students every year who are belonging to economically weaker section. And there is an examination is conducted to select such meritorious students. This examination is conducted by the relevant state or UT governments. The funds are directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries through the DPD mode. Okay, so now let us the next topic, which is Financial Stability and Development Council. So the 25th meeting of Financial Stability and Development Council was held recently in Mumbai. So this council is of course chaired by the Union Finance Minister. It is a non-statutory apex council under the Ministry of Finance, and it was constituted via an executive order in the year 2010. Okay, so the chairman or the chairperson of this council is the finance minister, and it is represented by heads of several financial sector regulators like the RBI chairman, SEBI head, PFRDA, IRDA, finance secretary, economic affairs secretary, etc. All even the chief economic advisor is also represented in this council. Okay, so in 2018, the government reconstituted this entire council, and it also brought forward the Minister of State, who is responsible for the Department of Economic Affairs, and the Secretary of Department of Electronics and Information Technology. You know, because we have these digital transactions which are growing leaps and bounds each year. So even the chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India was also accommodated, as well as the Revenue Secretary. Okay, so the aim of the council is to strengthen and institutionalize the mechanism of financial stability and development in the country. The Raghuram Rajan committee made this recommendation that this council should be made. So a financial sector reform, several financial sector reforms were suggested, and based upon this committee's recommendation, the government made this FSDC in the year 2010. So now let us see the next topic, which is Shakuntala Chaudhary. So PM Modi has expressed deep grief over the passing away of noted Gandhian Shakuntala Chaudhary ji. So she was of course an Indian social worker, and she was born in Assam, and she was known for her commitment and devotion to the Gandhian way of life. At a very young age, she joined the Kasturba Gandhi National Memorial Trust in Assam. She was closely associated with Vinoba Bhaveji, and she even participated in the Ban Cow Slaughter Satyagraha, which was started by Vinoba Bhave in 1978. So
at the insistence of Vinova Bhaveji, she was interested in promoting Devanagari script among different linguistic groups. So for that, she started a monthly magazine named Asomia Vishwanagari, so which she of course edited for many years. Seeing her contribution to the Indian independence movement and to the social uh, fabric of the country, she was awarded the Padma Shri Award in the year 2022 by the Government of India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.